Morning to all, I am Mohammad Naveez sir and welcome to Fajandar Junior College, Wahur, Department of Sociology. Today we have discussed about the first chapter, Introduction to Indian Society. In that we have to start the second point, that is a colonial period. The colonial period is started in the 16th century. This is started from the 16th century. Because of Portuguese are come in the 16th century to India. After that, French, Dutch and British are comes in 17th century by the purpose of trading. All are come for the purpose of trading. The Britishers are rule up to the 20th century to India. The Britishers are rule 20th century to India. They are spread the Christianity and they are doing the many of the social reforms. Because of the Britishers policies are different, therefore many of the social reforms are occur by the Britishers. Now next point, that is a consequences of colonialism. In that we have to see about the education. First point is education. Consequences of colonialism. First point is education. The education in the British period or colonial period is available in the English language. Medium of instruction is English for all peoples, and that education is open for all. That education is open for all peoples. They are taking anyone, they are not distinguished because of any of the caste, any of the religion, any of the gender, etc., etc. So any of the person taking the education, because of Britishers are giving the importance to the education. After that, Britishers are started made a law for the Education Indian University Act in 1856. The question will be asked in the exam. You have to know that the Indian University Act is passed in dash dash years. So you have to say 1856. Britishers are passed a law for education, Indian University Act 1856. Because of that, first universities are built in India. They are Calcutta, today's Kolkata; Bombay, today's Mumbai; Madras, today's Chennai. These three universities are built in India for education, and these universities are the first university. These universities are the first university. So education is started in the Britishers' rule. The medium of instruction is English, open for all categories, caste, religion, gender, and the Indian University Act is passed in 1856, and the first universities are built in India, that are Calcutta, Bombay and Madras, today's Kolkata, Mumbai and Chennai. The many of the reform movements are built due to the educations. The peoples are educated, that's why the many of the reform movements are built in India. Now second point, that is a culture. Culture is totally changed because of Britishers' rule. The many of the cultures, Hinduism, Sikhism, Jainism, Buddhism and Islam are totally changed. People are take the education from the universities or schools. They are destroy the other culture and change in the Britishers' culture. So the culture, educated people lifestyle become the copy of Britishers. They are doing the copy of Britishers, like food habits. They are accept the food habits of the Britishers. They are doing the dressing, same dressing as the Britishers. They are accept the different customs. They are use the language, means English language, for the medium of instruction. After that, they accept the sports
and other things from the Britishers, and the entertainment areas also accepted from the Britishers. So culture is totally changed in the Britishers rule. Why? Because educated peoples are accept the Britishers culture, and that culture is said about M.N. Srinivas is called this process to westernization. M.N. Srinivas called this process westernization, means follow the western culture is called the westernization. We are already learn about that in M.N. Srinivas and westernization in 11th standard. So peoples are follow the western culture, that is a westernization. Now for Urdu, हिंदुस्तानी समाज का तारुफ, ये सबक हम शुरू कर चुके थे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है नौ आबादियाती दौर। नवाबातियाती दौर ये 16वीं सदी से शुरू हो चुका था। सबसे पहले पुर्तगीज जो थे वो 16वीं सदी में हिंदुस्तान में आ चुके थे। इसके बाद फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज़ ये 17वीं सदी में तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए, और इसके बाद जो अंग्रेज़ थे वो यहीं बस गए और उन्होंने यहाँ पर राज करना, हुकूमत करना शुरू कर दिया, और 20वीं सदी तक उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की। सबसे पहले यहाँ पर जो आए वो थे पुर्तगीज़। उसके बाद फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज, ये सब तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए और इसके बाद यहीं बस गए। 17वीं सदी में ये लोगों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने 20वीं सदी तक यहाँ पर हुकूमत की। अब जब अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करने लगे तो उन्होंने ईसाईयत को बढ़ावा दिया और बहुत सारे समाजी इस्लाहात भी उन्होंने समाज में की, जैसे ज़ात के एतबार से, जिनसी एतबार से बहुत सारी समाजी इस्लाहात अंग्रेज़ों ने की। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि नौआबादियती दौर के नताइज। नौआबादियती दौर के नताइज में जो पहला नुक्ता हम देखने जा रहे हैं वो है तालीम। अंग्रेजी दौर हुकूमत में तालीम जो थी वो थी अंग्रेजी ज़बान में। अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम थी और ये सबके लिए खुली थी। कोई भी ज़ात का, कोई भी मज़हब का, कोई भी जिन्स का कोई भी इंसान तालीम हासिल कर सकता था। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे हिंदू मज़हब में अलग अलग तालीमी निज़ाम था, लेकिन जिसे हम पूरी तरह से देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में तालीम सबके लिए खुली थी। कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, कोई भी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, या कोई भी जिन्स का हो, उसे तालीम हासिल करने का पूरा हक हासिल था। इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया अंग्रेज सरकार के ज़रिए, जो बनाया गया 1856 में। लिख लेंगे आप, क्योंकि ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब बनाया गया। 1856 में बनाया गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में पहली यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई।
जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटी के नाम हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो आज का कोलकाता है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो आज मुंबई है, मद्रास यूनिवर्सिटी जो आज चेन्नई है। इस तरह से पहली यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान में बनाई गई और इन यूनिवर्सिटी के ज़रिए तालीमी निज़ाम चलने लगा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत सारे इस्लाहाती तहरीकें भी चलाई, जिसकी वजह से समाज में तब्दीली आई। इस्लाही तहरीकात, अंग्रेज़ों ने बहुत सारी इस्लाही तहरीकें चलाई, जिसकी वजह से समाज में तब्दीली आई। जिनसी एतबार से जो फ़र्क किया जाता था वो ख़त्म हुआ, ज़ात के एतबार से जो फ़र्क किया जाता था वो ख़त्म हुआ, मज़हब के एतबार से जो फ़र्क किया जाता था वो ख़त्म हुआ। इस तरह से तमाम शोबों में लोग आगे बढ़ने लगे और वो तालीम हासिल करने लगे। इसके बाद जो हम नौआबादी दौर के नताइज में दूसरा नुक्ता देखने जा रहे हैं वो है सकाफ़त। अंग्रेज़ी दौर हुकूमत की वजह से सकाफ़त पूरी तरह से तब्दील हो गई। जैसे हम कह सकते हैं कि जो तालीम याफ्ता लोग थे वो अंग्रेज़ों की तरह अपना रहन सहन करने लगे, उनके एतबार से उनकी तरह के खाने खाने लगे, उनकी तरह के कपड़े पहनने लगे, उनकी तरह के रसूमात निभाने लगे, उनकी तरह की ज़बानें बोलने लगे, उनकी तरह के खेल खेलने लगे और उनकी तरह के तफरीही काम करने लगे। इस तरह से लोग जो थे पूरी तरह से तब्दील हो गए और उनकी सकाफ़त तब्दील हो गई। सकाफ़त में तब्दीली आई। और अंग्रेज़ों की तरह लोग खाने, कपड़े, रसूमात, ज़बानें या ज़बान, खेल और तफरीहात, इस तरह से लोगों का जो सकाफ़त थी वो पूरी तरह से तब्दील हो गई। कोई भी मज़हब के लोग हो, वो हिंदू मज़हब के लोग हो, जैन हो, बुद्ध हो, इस्लाम हो, सिख हो, ये तमाम लोग जो थे वो पूरी तरह से तब्दील हो गए और उनके तर्ज़ ज़िंदगी में पूरी तरह से तब्दीली आई और वो लोग अपनी सकाफ़त को छोड़कर अंग्रेज़ों की सकाफ़त के एतबार से रहने लगे और ज़िंदगी गुजारने लगे। इसके बाद इसी को एम.एन. श्रीनिवास ने मगरबियत का नाम दिया, जो हम 11वीं जमात में पढ़ चुके हैं और 11वीं जमात में हमने तफसीलवार देखे थे कि मगरबी तर्ज से ज़िंदगी गुजारने को डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने मगरबियत का नाम दिया। अपने तर्ज ज़िंदगी को छोड़कर मगरबी तर्ज ज़िंदगी से ज़िंदगी गुजारना मगरबियत कहलाता है। एम.एन. श्रीनिवास ने मगरबी तर्ज से जिंदगी गुजारने को मगरबियत कहा। एम.एन. श्रीनिवास ने मगरबी तर्ज से ज़िंदगी गुजारने को क्या कहा? मगरबियत। तो ये नुक्ता हम ध्यान रखेंगे।
आधीच आपण आपल्या घटकाची सुरुवात केली होती, भारतीय समाजाचा परिचय. त्याच्यामध्ये आपल्याला जे बघायचं आहे दुसरा पॉइंट ते आहे वसाहतकालीन काळ. वसाहतकालीन काळ. वसाहतकालीन काळाची सुरुवात 16व्या शतकामध्ये झाली, जेव्हा पोर्तुगीज आपल्या भारतामध्ये आले. सर्वात प्रथम पोर्तुगीज हे आपल्या भारतामध्ये आले. त्याच्यानंतर फ्रेंच, डच आणि ब्रिटिश लोक हे आपल्या भारतामध्ये 17व्या शतकामध्ये आले आणि ब्रिटिश यांनी 20व्या शतकापर्यंत आपल्या भारतामध्ये राज केला आणि त्यांनी आपल्या ख्रिस्ती धर्म जे ज्यांचा होता ते ख्रिस्ती धर्माचे त्यांनी प्रचार केला इथे. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी काही सामाजिक कायदे बनवले. ते सामाजिक कायदे पण त्यांच्या राज्यामध्ये आपल्या भारतामध्ये बनवण्यात आले. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचे आहे ते वसाहतकालीन काळाचे परिणाम. पहिला जे आहे शिक्षण पद्धती. वसाहतकालीन काळामध्ये काय काय परिणाम त्याचे आपल्या भारतीय संस्कृतीवर झाले ते आपल्याला बघायचे आहे. त्याच्यामध्ये पहिला जे आपल्याला दिलेलं आहे ते आहे शिक्षण पद्धती. शिक्षण पद्धती हे पूर्णपणे इंग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध होती. कोणती भाषेमध्ये होती? इंग्रजी भाषेमध्ये. आणि ते सर्वांसाठी खुली केलेली होती. कोणीही ते शिक्षण घेऊ शकत होता. ते कोणत्याही धर्माचा असो, ते कोणत्याही पंथाचा असो, त्यांची कोणतीही जाती असो, त्यांचे कोणतेही लिंग असो, ते पण आपल्या अंग्रेजी शिक्षण होता ते घेऊ शकत होता. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी हे शिक्षणाला खूप मोठ्या करण्यासाठी एक कार्य केला, ते आहे इंडियन युनिव्हर्सिटी ॲक्ट. त्यांनी एक कायदा केला इंडियन युनिव्हर्सिटी ॲक्ट. ते झाला 1856 साली. हे तुम्ही नोंद करून ठेवा की इंडियन युनिव्हर्सिटी ॲक्ट कोणत्या साली पारित झाला, तर तुम्हाला बोलता येईल 1856 मध्ये. आणि 1856 मध्ये जेव्हा इंडियन युनिव्हर्सिटी ॲक्ट पारित झाला तेव्हा आपल्या भारतात 3 प्रथम युनिव्हर्सिटी उभारण्यात आली. त्याच्यामध्ये होती कलकत्ता जे आजचा कोलकाता आहे, बॉम्बे युनिव्हर्सिटी जे आज बनलेला आहे मुंबई, आणि मद्रास जे आज बनलेला आहे चेन्नई. अशा 3 युनिव्हर्सिटी आपल्या भारतामध्ये उभारण्यात आले. त्याच्यानंतर अंग्रेजी शिक्षणाचा परिणाम काय झाला की सामाजिक चळवळी आपल्या भारतामध्ये झाली. सामाजिक चळवळ झाली. जेव्हा लोकांकडे शिक्षण आला तर त्यांनी जे कायदे होते, जे समाजासाठी उत्पन्न देणारे व समाजासाठी घडवणारे न होते, ते कायदे लोकांनी मान्य केले नाही आणि सामाजिक चळवळी आपल्या भारतामध्ये झाली. त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरा जे बिंदू बघायचा आहे ते आहे संस्कृती. आपल्या भारताची संस्कृती हे पूर्णपणे त्याच्यामध्ये बदल झाला.
कशावरून? कारण काय, वसाहतकालीन काळामध्ये जे इंग्रजी लोक, जे ब्रिटिश लोक आपल्या भारतामध्ये आले, त्यांच्या बघून आपले लोकांनी आपली संस्कृती वगळून दुसरी संस्कृती, ब्रिटिश लोकांची संस्कृती स्वीकारली आणि आपली जी संस्कृती होती ते पूर्णपणे नष्ट झाली आणि ब्रिटिश लोकांची संस्कृती आपल्या भारतामध्ये वाढत झाली. तर आपण बोलू शकता की जेव्हा शिक्षित लोक जो होते त्यांनी आपला संस्कृती सोडून दुसऱ्या लोकांची संस्कृती आपल्या जीवनामध्ये आणली. तर त्यांचे सारखे खाद्यपदार्थ, त्यांचे सारखे कपडे घालणे, त्यांचे सारखी भाषा बोलणे, त्यांचे सारखे खेळ खेळणे आणि त्यांचे सारखे मनोरंजन केंद्रामध्ये बनवणे, हे आपल्या भारतामध्ये बदल झाला आणि पूर्णपणे आपण बोलू शकता की संस्कृतीमध्ये बदल झाला. हे संस्कृतीमध्ये बदलला आपले एक समाजशास्त्रज्ञ होते, त्यांनी त्याला पाश्चिमात्यकरण असा नाव दिलेला होता. कशासाठी? पश्चिम लोकांची संस्कृती आपल्या जीवनामध्ये आणणे हे काय आहे? पाश्चिमात्यकरण. कोणी बोलले होते? डॉक्टर M.N. श्रीनिवास. डॉक्टर M.N. श्रीनिवास यांनी पश्चिम पद्धती आपल्या जीवनामध्ये आणणे याला पाश्चिमात्यकरण असे म्हटले. तर हे आपला वसाहतकालीन काळामध्ये आपण त्याचे वसाहतकालीन काळाचे परिणाम बघितले, त्याच्यामध्ये शिक्षण पद्धती आणि संस्कृती हे पण बघितले आपण, आणि हे आपण इथे संपवतो. धन्यवाद.